Hello class 7 students, good morning to all of you. We have started doing the numericals of chapter 5 laws of motion. In this video also we will continue with the numericals. Basically we will solve NCERT questions. Okay, NCERT कुछ questions which I feel that very important, they may come in the examination. So I am solving those NCERT questions here. Your first job in numericals is that you solve all the questions of NCERT because those questions will be coming in the examination. Okay, most of them. So I am not writing the question here. What your job is, go to chapter 5 exercise question number 5.27. Okay, 5.27. Check out this question. The question says it's a helicopter. There is a helicopter whose mass is given to you 1000 kg. Okay, and inside the helicopter there are some crew and the passenger. That mass is given 300 kg. So small m, I have taken crew and the passenger as small m, whose mass is given to you 300 kg, and mass of the helicopter is given to you 1000 kg. And it's saying that the helicopter is moving vertically with some acceleration 15 meter per second square. That means it's moving like this. Up ऊपर की तरफ उठ रहा है helicopter with acceleration of 15 meter per second square. Okay. Now G value is not given to you. Just to make the calculation easy, I am taking G as 10 meter per second square. Now listen very carefully. In an examination, if in the question G value is not given to you, you will not take 10, you will take 9.8. I have taken here 10 because to make the calculation easy. But in your examination, G value will be always 9.8 if it is not given. If in the question is written that take G equals to 10, then you can take 10. Okay. Now this is the question. You understand the question? There is a helicopter whose mass is given to you. Inside the helicopter there is some crew and a passenger whose mass is given to you. And it's told like the helicopter is rising vertically with a acceleration of 15 meter per second square. Now what the first question? Force on the floor of helicopter by crew and passenger. यहाँ पे एक बहुत बड़ा गलती होता है. Try to understand now. Force on the floor of helicopter by crew and passenger. जो crew और passenger helicopter के अंदर बैठा हुआ है, वो कितना force लगा रहा है floor of the helicopter में. So see what mistake we do. This is the helicopter of mass capital. This is the mass of mass smaller. Okay. Now inside the helicopter there is a crew. So this crew is applying how much force to the floor? We feel it is equals to mg. Because mg, जितना भी crew और passenger का weight होगा, उतना ही floor में force लगा होगा, right? That is correct. गलत नहीं है. But the problem is, since this helicopter is moving up, it is in motion. That is the reason ये mistake हो जाएगा. ठीक है? मैंने बोला था ना always like हमारा जो weight है वो actual weight नहीं है. हमारा weight is R. Actually the weight of the passenger, the weight which we feel is the force. Okay, but actual weight is not the force. हमारा जो weighing machine जो measure करता है वो weight measure करता है. In the theory I told you that the weighing machine did not measure the actual weight, it measures the apparent weight, and that is the actual weight. Apparent weight is the weight in real life, right? Similarly, we know that the weight of the passenger and the crew is the force on the floor. That weight is not always equals to mg. That weight is the apparent weight, R. So R is the actual force, actual weight of the crew and passenger. Do you understand this? So always we will consider that weight is not mg whenever the body is moving. Okay, or when the body is not moving, then also the weight is not mg. It is equals to R, but sometimes it becomes equals to mg. So I say that weight is mg. Right? So try to understand these things. तो ये पैसेंजर एंड क्रू है, इसने इस फ्लोर में इतना फोर्स लगाया, बट क्या ये फोर्स एक्चुअल फोर्स था? नहीं था. जितना भी फोर्स लगाया है उसके कारण फ्लोर ने इस क्रू में एक फोर्स लगाया आर, राइट? That are written. mg is the force on crew by gravity. We can study this mg in two ways: force on crew by gravity or force on floor by crew. Force on floor by crew, right? And this is only they are asking force on floor by crew. Then answer should be mg. But what I have told you, it cannot be equal to mg because the helicopter is moving. Then what is R? R is the force on crew by floor. Floor ने जो force लगाया, अगर R is the force on crew by floor, then by Newton's third law, force on floor by crew will be equals to R, but acting vertically downward, that is R dash.
This is we are interested in. So what is R dash? Force on flow by crew, vertically downward. Okay, so this is the actual force which is acting on flow. This is not the force which is acting on the flow. Okay, this is the weight of the crew, which we feel that it acts on the flow, but it's not acting because why? Because the body is moving. The actual weight doesn't work. Okay, so the R is the force on crew by the flow, and by Newton's third law, अगर ये crew पे लग रहा है by flow, तो इतना वैल्यू flow पे लगेगा by crew, opposite. So R dash we are interested in, and that R dash is equals to R. That means we will calculate R. That is equals to R dash. तो अगर R vertically upward है, तो R dash vertically downward होगा. Clear? And the question is find the magnitude and direction. दोनों निकालना है, magnitude भी दिखाना है, direction भी दिखाना है of the force on floor of helicopter. Okay? So I hope you understand what mistakes we do. We think that mg is the force on floor, but it will not be equals to mg. The reason is it is moving. Okay? तो हम कैसे निकालें? So we know weight is that force. So weight is not mg, it is R, apparent weight. Because actual force which is acting is the apparent weight, not the actual weight. Right? Okay, so we understand from here that R dash is the thing which you require. R dash is equals to our Newton's third law. तो मुझे R dash निकालना है, force on floor by crew. Clear? Understand? So R dash निकालने के लिए R चाहिए. Now how to find R? Now R is the force on crew by the helicopter. Mg is the force on crew by the gravity. Both the forces are acting on the same body, so I can use dynamic equation of forces. बॉडी एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स, ध्यान से सुनो मैं क्या बोला, ये दोनों फोर्स बॉडी पे लग रहा है. सो एक्चुअली में हमको ये कभी नहीं लिखना चाहिए, तो हम इसे समझाने के लिए लिखे थे. सो व्हाट इज दिस mg? इट इज द फोर्स ऑन क्रू बाय ग्रेविटी. इट इज नॉट फोर्स ऑन फ्लोर. फोर्स ऑन फ्लोर बाय द क्रू इज R dash. ओके, एंड विच इज द ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ एक्शन R, that is force on crew by flow. I hope you understand. So these are the two forces which are acting on the crew, so I can make the dynamic equations. I told you when you make dynamic equations of forces, you have to check कि सारे forces की बॉडी में लगने चाहिए. तो ये R भी इसी में लग रहा है, mg भी इसी में लग रहा है, और ये बॉडी ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स ma. ओके, फ्रॉम देयर यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन. दोनों फोर्सेस की बॉडी में लग रहा है और बॉडी ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स ma. From there you calculate the value of R, and that R is nothing but R dash, but opposite direction vertically downward. Okay, now next the question is give the magnitude and direction of action of the rotor of the helicopter on air. What is the rotor of the helicopter? That blades. Okay, उस रोटर का एक्शन निकालना है ऑन एयर, सराउंडिंग एयर में क्या एक्शन है. नाउ फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द हेलीकॉप्टर वर्क्स. हेलीकॉप्टर का जो रोटर घूमता है ना, वो एयर को नीचे की तरफ धक्का देता है, जिससे कारण एयर उस हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ धक्का देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हेलीकॉप्टर राइजेस अप. अंडरस्टैंड? जो रोटर है वो क्या करेगा? आसपास के सराउंडिंग एयर को फोर्स देगा नीचे की तरफ. बिकॉज ऑफ दैट हेलीकॉप्टर विल मूव अपवर्ड. अंडरस्टैंड? सो आई वांट एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन एयर. तो ऑन एयर में जो एक्शन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, R dash. अगेन टेक इट एज R dash. ओके, R dash क्या है? जो हेलीकॉप्टर एयर पे फोर्स लगा रहा है. सो व्हाट इज R dash? फोर्स ऑन एयर बाय हेलीकॉप्टर, एंड इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड. अब ये है फोर्स ऑन एयर हेलीकॉप्टर. सो बिकॉज ऑफ दैट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, हेलीकॉप्टर में जो फोर्स लगेगा ऊपर लगेगा इक्वल्स टू R. एक हेलीकॉप्टर में R फोर्स लगा जो एयर ने दिया. बिकॉज दिस आई कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली. फॉर कैलकुलेटिंग दिस मुझे इक्वेशंस बनाना पड़ेगा ना. तो एयर में तो ये फोर्स किस पे लग रहा है? एयर पे. एयर तो मूव नहीं कर रहा ना कहीं भी, ये एक्सेलरेशन तो हेलीकॉप्टर का दिया हुआ है, तो मुझे फोर्सेस हेलीकॉप्टर का चाहिए. सो दैट वी कैन मेक द इक्वेशंस. दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू द हेलीकॉप्टर. यू अंडरस्टैंड क्लास? ओके, तो अब मुझे R dash निकालना है, दैट इज फोर्स ऑन एयर बाय हेलीकॉप्टर. ये निकालना है, लेकिन ये निकालने के लिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एयर का इक्वेशन नहीं बनाना आएगा. ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन हेलीकॉप्टर का दिया. तो इस फोर्स के कारण और एक फोर्स हेलीकॉप्टर में लगेगा R.
vertically upward. और एक फोर्स हेलीकॉप्टर में लगेगा, that is weight of the helicopter. Force on helicopter by the gravity. So these are the two forces acting on the helicopter with crew. सारा मिला के होगा. क्यों? क्योंकि पूरा चीज ऊपर जा रहा है ना. हेलीकॉप्टर एंड क्रू, the whole thing is going up, right? So मुझे टोटल मास लेना पड़ेगा m plus n, capital M plus small m, and the whole thing is moving upward. So these are two forces acting on this whole crew and helicopter. So what is the equation? ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स equals to net force. From there you calculate the R value. Okay, you got the R value. Now R dash is nothing but R. How much it is? 32500 Newton. कहाँ लग रहा है? Vertically downward. I hope you understand. Now the third question. Find the magnitude and direction of force on the helicopter by air. ये कहाँ है भाई? We already calculated. हेलीकॉप्टर में जो फोर्स लग रहा है बाय एयर वो कितना है? R, which we already got, 32500 Newton. And where it is direction? Vertically upward. I hope you understand, class, what is going on. Okay, so to calculate this, we already calculated the third point. Let's go to the next question, class. Okay, class, the next question is 5.32. Question number 5.32. NCERT question only. Okay, so let's read the question. I lost the question. 5.32. Wait for some time. Okay, the question is a block of mass 25 kg. This is a block of mass 25 kg is raised by a 50 kg man. So small m is 25 kg for the mass, capital M 50 kg for the man. Okay, and it is raised by a man in two different ways. One is this way. Forget about these forces. एक ये तरीके से ऐसे खींचेगा, एक पुली यूज करके खींचेगा. Okay, there are two ways by which the weight is lifted. What is the action on the floor by the man in the two cases? फ्लोर पे कितना एक्शन लगेगा by the man in the two cases? फ्लोर पे कितना फोर्स लगेगा? Okay, that we need to calculate in the two cases. Next, after calculating the actions, next it is saying if the floor yields to a normal force of 700 Newton. What is the meaning of yield? Y-I-E-L-D. The force yields by, that is breaking force. Yields मतलब फ्लोर टूट जाएगा, धस जाएगा. तो फ्लोर में अगर 700 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगे तो ये फ्लोर टूट जाएगा. That is certain. If the floor yields to a normal force of 700 Newton, which mode should the man adopt to lift the block without the floor yielding? इनमें से कौन सा तरीका यूज करूं मैं so that the floor doesn't yield? So for that you need to calculate the action. Let's see which action. What is the action in this case? What is the action in that case? Okay. After calculating the action, whichever action is less than 700 Newton, that method I will use. If it is more than 700 Newton, then the floor will yield. Then what is the use of this method? Okay. So see what are the things given to you. कुछ नहीं दिया था, एक man दिया हुआ. See the figure in a book. Man is given to you. One mass is given to you. अब मैं क्या सोच रहा हूँ? ये man को जब इसको ऊपर उठाना है, you need to apply some force F1. What is F1? Is a vertically upward force to lift the load. इस लोड को उठाने के लिए उसको F1 फोर्स लगाना पड़ेगा. ये जो F1 फोर्स है वो कितना होगा? Equals to mg होगा. इस मास का वेट के बराबर. So that F1 equals to mg vertically upward to lift the load. Clear? So this is the action of the man to lift the load. Every action has an equal and opposite reaction. ये मैन ने एक्शन किया, तो इस एक्शन के कारण वो एक रिएक्शन भी देगा ना ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लोर में, क्योंकि जब हम कुछ उठाएंगे तो फ्लोर पे प्रेशर देंगे ना. सो व्हेन आई एम डूइंग दिस एक्शन, द एक्शन इज डन ऑन दिस बॉडी. ओके, देन देयर इज सम रिएक्शन on the floor. That is this F2. So what is this F2? F2 is equals to F1. There is reaction on floor by Newton's third law. Every action has an equal and opposite reaction, but they act in different bodies. So ये action उसने काम किया. Okay, so reaction floor पे लगा. अब फ्लोर पे एक रिएक्शन लगा F2 फोर्स जो इक्वल्स टू F1 था, मतलब mg. साथ साथ फ्लोर में एक वेट भी लग रहा है mg. अब पिछले वाले केस में हेलीकॉप्टर में तो मैंने बोला था वेट नहीं लगता है फ्लोर में, तो उस केस में हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था. इस केस में क्या बॉडी मूव कर रहा है? नहीं ना. सो बॉडी का जो वेट होगा वही एक्चुअली अपरेंट वेट भी होगा. सो mg इज द वेट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. दिस थिंग्स आर नॉट मेंशन्ड हियर, बट यू कैन नोट इट डाउन ऑन योर ओन. ओके, हियर व्हाट इज द वेट, दैट इज इक्वल्स टू r के बराबर होगा ना. सो व्हाट इज द फोर्स ऑन फ्लोर बाय द मैन इज द वेट mg.
because the man is not moving. हाँ, ये अगर man move करने लगता, then again we need to calculate the R value like in helicopter case we did. So one force is mg, weight of the man acting on the floor. One is the action due to the lifting of this body. So two forces are acting downward on the floor. So what is the net force on the floor? Add both the forces because they are in downward direction. Mg plus F2. F2 is small mg. Subsequently we are getting 750 Newton. 750 Newton है 700 से बड़ा. That means what will happen to the floor? Floor will yield. Okay, floor will yield. Now in this case what is happening? See, in this case the man is applying force downward direction F1 to lift this load. Of course that F1 will be equals to mg. F1 equals to mg. Vertically downward to lift the load. तो इसने एक्शन नीचे किया तो रिएक्शन ऑन द फ्लोर विल बी अपवर्ड F2. Every action has an equal and opposite reaction in two different bodies. So F1 is the action, F2 is the reaction on the floor. So what is F2? F1, reaction on the floor by man by Newton's third law. That is vertically upward. Next, weight of the man is acting downward. अब फ्लोर में दो फोर्स लग रहा है mg and F2 but they are in different directions. पहले फ्लोर में दो फोर्स लग रहा था, both were in same direction, they add up. Now one force is acting mg, capital mg, on the force acting on the floor is F2. So what is the net force acting downward? mg minus F2. Two forces upward and downward. तो नीचे वाला minus ऊपर वाला mg minus F2. So what is F2? Small mg. Substitute करो, we getting 250 Newton. Therefore now you have to write in language. You write in normal language that in the first case the force action on the floor is 750 Newton, which is greater than the 700 Newton braking force. Hence that floor. In first case the floor yields, but in the second case the action on the floor is 250 Newton, which is less than the 700 braking force. Hence in second case the floor will not yield. So we will adopt the second method. Okay, understand? Let's go for the next question. Okay class, now this question is very interesting because here we deal with a special force called a pseudo force. Okay, जिसका मैंने theory आपको भेजा था. Pseudo force, let's talk about pseudo force something. What is pseudo force? Pseudo force is a invisible force which acts on a body when the body is accelerating. So for example, there is a body which is accelerating in this direction with some acceleration in it. That means the body will have some force in this direction. Since the body is accelerating, there is one more force which is acting in this direction, which is called pseudo force, is equals to same what is acting upward in forward direction. So pseudo force is always acts in a body which is acting when the body is accelerated, and it is always opposite to the acceleration. Okay, acceleration is direction, उसका opposite pseudo force लगेगा. Now the question is, मैंने अभी तक pseudo force के बारे में कभी काम नहीं किया, तो इस क्वेश्चन में क्या जरूरत है? That we'll understand first. Okay. So 5.36, give a read to 5.36. What is it? We have a truck. Okay, and over the truck, the back part of the truck is open. Okay, and in the back part there is a mass M, whose box of mass M, whose mass is given to 40 kg, and this box is at a distance S from the open end, and that this S is given to you 5 meters. Okay, and truck is initially at rest and it started moving in this direction, forward direction, with acceleration 2 meters per second square. And there is some coefficient of friction between the box and the floor of the truck. That coefficient of friction is 0.15. That is given to you. Okay. Now they say, at what distance from the starting point does the box fall off the truck? When the truck starts moving, this thing we know. अगर गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी के पीछे वाला सामान पीछे जा रहा होता है, गाड़ी आगे जा रहा है तो ये वाला सामान पीछे जाएगा, मूव करता है पीछे, ये क्यों जाता है वो समझना जरूरी है. ओके, तो जब ये ट्रक चलना स्टार्ट होगा, एक टाइम आएगा जब ये बॉक्स नीचे गिर जाएगा. उस टाइम में ट्रक कितना दूर चला गया, मतलब ट्रक कितना दूर आगे जाएगा सच दैट द बॉक्स फॉल डाउन. ओके, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये बॉक्स पीछे क्यों जाएगा. नेक्स्ट फर्स्ट रीजन. नेक्स्ट, कितने टाइम बाद बॉक्स गिर जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तुम्हें पता है. We need to first identify that why the box will fall down. Of course, there is some force acting in this direction. Because of that, box will fall down. Right? Next, it will fall down after what time? उतने टाइम में ट्रक आगे चला गया होगा. So we'll calculate the distance of the truck then. First, we need to find the time at which the box will fall down. Now let's check different forces acting on the box. देखते हैं क्या क्या फोर्स बॉक्स में लग रहा है कि बॉक्स पीछे की तरफ मूव होगा. That we need to understand.
सबसे पहले बेसिक फोर्सेस काम करते हैं, एक mg बॉक्स का वेट और नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, राइट. नेक्स्ट, since the truck is moving some acceleration, that means there will be some force acting in this direction. Since the truck is also moving, the box is also moving with acceleration. That means in forward direction, the box has some acceleration. That acceleration is equal to acceleration of truck. And there is some force also acting on the box. That force on box, forward direction. ये force कहाँ लगा? Forward direction लगा. I'm taking that force as F1. The force which is acting on the box due to acceleration of the truck. So force on the box क्या होगा? Mass into acceleration. Which acceleration? The acceleration with which the box is moving front. The box is actually not moving anywhere. The truck is moving. Because of that, the box is also moving. Okay. So but the box is not moving initially with respect to the truck. So since truck is moving forward, that means box is also having some acceleration A. That means the box also has some force. This force is acting forward direction. Clear? Now, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये बॉडी पीछे क्यों जा रहा है? नाउ कम्स द स्यूडो फोर्स. सिंस इस बॉडी में एक फोर्स इस तरह लग रहा है और ये बॉडी एक्सेलरेटेड बॉडी है, इसका मतलब इसके ठीक ऑपोजिट में एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा. And because of that pseudo force, body is going to that side. Otherwise, it will never go that side. Okay? So हम यहाँ से समझ में आया कि बॉडी पीछे की तरफ मूव कर रहा था, इसका मतलब कोई एक फोर्स लग रहा है जो इस तरफ जा रहा है. Since नॉर्मल थ्योरी क्या बोलता है? नॉर्मल थ्योरी बोल रहा है कि फोर्स तो बॉडी बॉक्स में आगे की तरफ लगना चाहिए, क्योंकि बॉक्स का एक्सेलरेशन आगे की तरफ, because truck is also moving in front. So box should experience a force which is in forward direction. Okay, but the box is moving backward direction. That means there is some pseudo force which is acting in backward direction. You clear this? That pseudo force, since box is accelerating, okay, comma, pseudo force acts on the box P in backward direction. Q box accelerated है. Okay, and ये क्यों लगा? कैसे पता चला कोई pseudo force पीछे की तरफ लग रहा है? क्योंकि बॉक्स पीछे की तरफ गिरेगा ना after some time. Clear? Oh, since due to this force, the body is moving backward. That means there is some frictional force acting on the box. Front direction में, क्योंकि box always frictional force act opposite to motion. तो box तो इधर जा रहा है, that is frictional force पीछे लगेगा. So what is that frictional force acting? Mu into N. N is nothing but mg. N is equals to mg. The box is not moving like this, so N will be equals to mg. So what is this? Frictional force acts on the box due to P. Okay. जो किस तरह एक्ट कर रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा है. नाउ आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स? वन इज द स्यूडो फोर्स एंड अदर इज फ्रिक्शन फोर्स. ओके, ड्यू टू दीस टू फोर्सेस द बॉक्स इज इन मोशन. ड्यू टू दिस फोर्स बॉक्स मोशन में नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक. विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, इसके कारण वो मोशन में नहीं है. ये फोर्स के कारण पूरा ट्रक के साथ वो बॉक्स आगे जा रहा है. लेकिन मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक ये बॉक्स कहां जा रहा होगा. विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, तो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक F1 is not the force because box is not moving in front. You understand this? Box is moving in backward direction with respect to truck. So with respect to truck, the box has two forces, P and F. So one force is backward direction, other force is forward direction. What is the net force towards backward direction? P minus F. Net force on the box in backward direction is P minus F. So how much force is acting? 20 Newton. अब मुझे पता चल गया जो net force acting on the box towards backward direction is 20 Newton. Because of this force, the box will have some acceleration which is towards backward direction. What is the acceleration? Force equals to ma1. Okay. So I'm taking this force as F1 and this force as F. Otherwise you will get confused. Huh? So because of this force which is acting backward direction, the box will have some backward acceleration. Now why I need that backward acceleration? मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था कितने देर बाद बॉक्स नीचे गिरेगा और तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है. तो डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम निकालना है. तो टाइम और डिस्टेंस का दो ही इक्वेशन है. एक है v इक्वल्स टू यूपी प्लस एटी जिसमें टाइम दिया हुआ है, और दूसरा s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. इस इक्वेशन में डिस्टेंस और टाइम दोनों है. सो डिस्टेंस इज गिवन टू यू and we need to calculate after how long the box will fall down. That means you need to calculate t. So for this expression we need acceleration. Which direction acceleration? Backward direction acceleration.
That's why I did. So these are all the things, calculations, and we calculated the backward acceleration. Okay, now we can calculate after what time the box can fall down. वो टाइम मिल जाएगा, उतना टाइम में ट्रक कितना आगे गया that we can calculate. So let after t time box fall down. Okay, so what is the distance equals to ut plus half at square? How much is distance? Box is in 5 meter. Box का initial velocity 0 था, half a t square. What is this a? A is the acceleration a1. Backward direction में जो गिर रहा है a1. From there you will get the t value is 4.41 seconds. Okay, इतना सेकंड बाद बॉक्स गिर जाएगा. In that much time the truck has covered some forward direction distance. So what is the distance covered? Distance covered by truck in forward direction in time 4.47 सेकंड. S equals to ut plus half at square. ट्रक का साथ काम करते हैं तो ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, half acceleration of the truck is 2 into t square. How much is t square? 20. Instead of using this expression, use this expression. What is t square? 20. Put the value, you will get 20 meter. So when the truck moves 20 meter in forward, this box fall down. Okay, अब हम वापस सुनो मेरी बात में क्या क्या बोलना चाह रहा हूं. Okay, let's have a small recap of this solution again. It is told in the question that the truck is moving forward with certain acceleration and its initial velocity is 0. It was told in the question that the truck back part, which is open, has a box 5 meter from the open end. Okay, and it is asked like after how long distance the truck traveled so that the box fall down from the back side. After how long distance? That means how much distance the truck will travel in forward direction such that the box in the open end fall down. Okay, तो मुझे उस बॉक्स का डिस्टेंस पता था, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि आफ्टर व्हाट टाइम द बॉक्स विल फॉल डाउन. कितने टाइम बाद बॉक्स गिर गया. अगर मैं वो टाइम निकाल लूं, then we can easily calculate how much distance the truck traveled in that time. So my aim is to calculate that time. Okay. Now how to get that time? Time का velocity दो expression है, a v equals to at, एक s equals to ut plus half at square. Out of this we are using s equals to ut plus half at square. Why I am using this expression? Because s is given to you. Now in using that expression, this is the s traveled in backward direction. To use this expression, we need acceleration in backward direction. Okay, to get the acceleration in backward direction, we need force in backward direction. That means there is some force acting through a backward direction. यहाँ से इतना कहानी समझ में. अब let's see what are the forces acting. So due to the acceleration of the truck, the box is also accelerated in forward direction. Okay, but that acceleration is not acceleration of box with respect to truck. That is the acceleration of box with respect to outside ground. मैं ट्रक चल रहा है, मुझे दिख रहा है बॉक्स आगे जा रहा है. ओके, बाहर जो मैं आदमी खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में बॉक्स आगे जा रहा है. लेकिन अगर मैं ट्रक में खड़े हो जाऊं तो ट्रक के रेस्पेक्ट में बॉक्स पीछे जा रहा है. सो दिस इज द फोर्स ऑन दिस बॉक्स, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, विथ रेस्पेक्ट टू द आउटसाइड ग्राउंड. क्लियर? ये फोर्स क्यों आया बॉक्स पे? तो ये एक इमेजिनरी फोर्स है जो बॉक्स पे लग रहा है, हमें फील हो रहा है क्योंकि बॉक्स एक्सीलरेटेड है. क्लियर? Done. Now because of this force and since the box is accelerated, there is one pseudo force start acting which is in opposite direction. And because of this pseudo force, the box is actually moving in backward direction with respect to truck. So there is a frame of reference is changing class. That is a problem. Okay, that these are the two forces which are acting on the box with respect to truck frame. मतलब मैं ट्रक के ऊपर खड़े हो जाऊं तब मुझे बॉक्स में ये जो फोर्स दिखेगा, तब मुझे ये फोर्स नहीं दिखेगा. ओके, और ये फोर्स मुझे कब दिखेगा? जब मैं ट्रक के बाहर खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं कि ट्रक आगे जा रहा है तो बॉक्स का भी कुछ एक्सीलरेशन आगे जा रहा है. तो सिंस बॉक्स में एक्सीलरेशन से बॉडी आगे जा रहा है लेकिन बॉक्स पीछे भी जा रहा है, इसका मतलब उस एक्सीलरेटेड के कारण एक पीछे स्यूडो फोर्स लगा है, एक इमेजिनरी फोर्स लगा है जिसके कारण बॉक्स पीछे जाता है. यू अंडरस्टैंड? सो सिंस बॉक्स पीछे जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एट ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी. सो बॉडी का मोशन आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे. फ्रॉम द वी अंडरस्टैंड देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स. सो देयरफॉर नेट फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट? बैकवर्ड फोर्स माइनस फॉरवर्ड फोर्स. नेट फोर्स मिल गया. ये जो नेट फोर्स मिला वो किस तरफ डायरेक्टेड है? जो नेट फोर्स मिला वो इस तरफ डायरेक्टेड है, F1. बिकॉज ऑफ दिस नेट फोर्स ऑन द बॉक्स देयर इज सम नेट एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन मुझे इस फॉर्मूला में लगाने के लिए चाहिए था. ओके, सो इनडायरेक्टली
वी विल थिंक इन दिस वे। पहले दिमाग में ये आना चाहिए तुम्हारा, ये सब नहीं, मैं जिसे सॉल्व किया ना ऐसे नहीं, पहले तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस पता है, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए? जो एक्सेलरेशन बॉक्स पे पीछे की तरफ काम कर रहा है। ओके, अब मैं देखूंगा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फिर मैं देखूंगा नेट फोर्स कहां लग रहा है, बॉक्स पीछे की तरफ कितना लग रहा है, देन फ्रॉम द विल गेट द एक्सेलरेशन। ओके, द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड शुड बी दिस, फ्रॉम द आई कैलकुलेट द एक्सेलरेशन वैल्यू, डन, आफ्टर गेटिंग द एक्सेलरेशन वैल्यू गेट द टाइम वैल्यू, कितना टाइम बाद बॉक्स गिरा, एंड that much time the truck will move forward in certain distance. Okay class, that's all for this video. Thank you very much.